stability code. So intact stability code 2008. So these are the 4 topics for this particular month that we have, which we'll be doing. The biggest is, of course, Bilging. That will form the biggest. And Bilging will be doing it from the Nutshell, Volume 3, Captain Subra's Nutshell, Volume 3. So सॉरी, ये वॉल्यूम 2 भी आएगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम 3 में भी है एंड वॉल्यूम 2 में भी लास्ट चैप्टर भी है, इन द ओल्ड वॉल्यूम 2. तो वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 दोनों. Okay, so let's begin with Bilging. I'll also be doing plotting with the June batch later on in the other months when your cycle comes. So in your 3rd month, I'll be coming on to plotting, radar, that is radar plotting, which is a compulsory question of your nav aids paper. So uske liye you will need the plotting sheets and the radar plotter, the roller ruler. So please get hold of that, the roller ruler and the long divider. So that I'll tell you separately in another month, but I'll be doing that with you. All right. In Bilging, हमारे सिलेबस में है बेसिकली block shape vessel only. Block shape vessel only. That means hinge shape की Bilging is not in our syllabus. So we'll be concentrating only on box shape vessel for all our calculations. Okay. In Bilging, box shape में, there'll be 3 types of Bilging that we'll be doing. One is called as midship compartment Bilging. Midship compartment Bilging. Another is called as end compartment Bilging. And another is called as intermediate compartment Bilging. Midship compartment Bilging का मतलब है that the bilging is happened in hold number 4, which is at the midship. So the vessel will sink bodily. So there will be a bodily sinkage. There will be a bodily sinkage. So we are talking about hold number or tank number 4 or 5 of a vessel, depending on the size of the vessel, of course, now, but midship wala जो tank है, or it could be 3 also, 3, 4, 5, कोई भी इनमें से हो सकता है, depending on the size. End compartment bilging का मतलब है या तो forward end या aft end. So we are talking about hold number 1 or hold number 7 or tank number 1 or tank number 7, which is forward end or aft end.
And so therefore, when this kind of a bilging happens, then there would be a bodily sinkage and there will be a change of trim also, plus a TC, a change in trim will happen. And similarly, intermediate compartment, which is neither end nor midship. So we are talking about hole number 2, 3, or we're talking about hole number 6, which is neither midship nor end. So in this also you will have both. You will have a bodily sinkage and you will have a change of trim also. But the change of trim here will be less than the change of trim here. But nevertheless it will be there. But change of trim kamti hogi. It will be lesser than the end compartment. क्योंकि इसमें लीवर कम होगा, इसमें लीवर ज्यादा होगा. So this is what we are going to be focusing on. In bilging, we will have initial condition, even keel, final condition, initial condition should be even keel, no trim, initial condition. Final condition can be a trim, but no list. List and trim in bilging is not in our syllabus. Trim is there, no list. That means if bilging happens uh, in wing tanks, port and starboard, that is okay. That is in our syllabus. But only bilging of a port tank is not in our syllabus, because if I bilge only a port tank, I will have a final list, which is not in our syllabus. Initial even keel is in a condition. However, as a bouncer, I will do initial trim also. I will do that as a bouncer, so that अगर कोई आ जाता है ऐसा बाउंसर, तो देन यू आर एबल, यू नो कि मेथड क्या करना है, कैसे, हाउ टू हैंडल इट. सो आई विल डू and tell you the method and do one question on initial trim as well. I'll do that as well. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? Whatever I've just discussed, is it okay with everyone? Yes, sir. Okay. Okay. I'm erasing this. Okay. So let's take. So we're starting off with midship compartment. Midship compartment से शुरू कर रहे हैं. This is a vessel. Left is forward, right is aft. ये हमारा मिडशिप कंपार्टमेंट है. ये हमारा जहाज फ्लोट कर रहा है इवन कील पे. सो इनिशियली जो मेरा जहाज की डिस्प्लेसमेंट है, द W is acting downward through the center of gravity, and the
upward force, buoyancy, is acting through the center of buoyancy, COB, and both are in equilibrium. Vessel is in stable equilibrium, and so therefore vessel is afloat. So at this point of time, my underwater volume is below WL. Now, let us say this hold or tank of mine has a hole. तो इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, एंड पानी भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है. नाउ बिकॉज इसमें पानी भर गया एंड ये होल है, तो देयरफॉर ये है मेरी बाहर में दरिया. दरिया से पानी आया अंदर, और यही पानी अब वापस बाहर भी जा सकता है. सो दिस देयर कैन बी अ फ्री फ्लो ऑफ वाटर in and out of the darya, out of the sea. So it is as if this compartment of mine is no longer a part of the ship, but is a part of the sea, because the darya pani can come in anytime and go out anytime. So therefore it is as if ये वाला जो मेरे ओरिजिनल मुझे ये कंपार्टमेंट बॉयंसी दे रहा था, अब it is no longer providing me any buoyancy. अब it has become a part of the sea. So as a result, because I've lost this buoyancy, this has gone out to sea. This volume is lost. My vessel is unstable now, is in unstable equilibrium. So she needs to come back to stability. How will she come back? This buoyancy needs to be restored. So there is something called as reserve buoyancy. Up till now, reserve buoyancy मैंने खाली definition में पढ़ा था second mates में. What is the definition of reserve buoyancy? Anybody remembers? Reserve buoyancy की definition क्या है? Volume above the water surface. Volume of enclosed spaces above the waterline. Volume of enclosed spaces above the waterline, यानी कि ऊपर की जो है वॉल्यूम, उसमें जो enclosed spaces हैं वो कहलाती है reserve buoyancy. Why is it called reserve? Because it comes into handy and in play when I have bilging in the underwater compartments. Then the reserve buoyancy comes into play. Up till now मैंने उसका reserve buoyancy को कभी यूज ही नहीं किया. किसी भी स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस में कभी यूज ही नहीं होता मेरा. अब यूज होगा. अब ये रिजर्व buoyancy जो ऊपर है, ये जहाज को buoyancy देगा. क्यों? क्योंकि इतनी लूज हो गई है. अब ये जहाज को देगा buoyancy, and the ship will start sinking to a new waterline. जहाज डूबने लग गया, और ये न्यू वाटरलाइन W1L1 पे सेटल किया. ये बन गई मेरी मीन सिंकेज. ये बन गई मेरी गेन्ड buoyancy. और अंदर का पानी मेरा बढ़ता गया, और तब तक बढ़ता गया जब अंदर का पानी और बाहर का पानी
मैच कर गया। जब ये दोनों मैच कर गए, आई एम बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, आई एम फ्लोटिंग वंस अगेन। व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एंटायर प्रोसेस? मेरे जहाज की रिजर्व बॉयंसी कम हो गई है। अब मेरी रिजर्व बॉयंसी इतनी रह गई है। सपोजिंग अब मेरा एक और टैंक बिल्ड हो जाता है, फिर से लॉस बॉयंसी होगी, फिर से रिजर्व बॉयंसी अपनी बॉयंसी देगा, और फिर से मैं एक नए ड्राफ्ट पे आ जाऊंगा। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरी रिजर्व बॉयंसी जीरो नहीं हो जाती। जब मेरी रिजर्व बॉयंसी जीरो हो जाएगी, आई विल सिंक, आई विल बी सबमर्ज्ड एंड आई विल बी सिंकिंग। This is the process of what is called as bilging. And in this entire process, supposing मेरी इनिशियल वॉल्यूम V1 V इनिशियल थी, उसमें से मैंने ये रेड वाली मेरी वॉल्यूम लॉस्ट हो गई, ये मेरी V लॉस्ट है। फिर मैंने ये ब्लू वाली वॉल्यूम जो थी ये गेन कर ली, एंड दिस गिव्स मी माय V फाइनल। So I had a V initial, I lost, so minus V lost, plus V gained the blue portion. But whatever I lose, V lost is equal to V gained. So the two will cancel. I can only gain whatever I have lost. So if my red portion is 500 cubes, which I have lost, then my blue portion will also be 500 cubes. I will lose 500, I will gain 500. And I'm back to square one. So which means V initial is equal to V final. That means my underwater volume remains unchanged. Lost buoyancy method. This method is called as lost buoyancy method. Volume remains constant. Volume does not change. This is the first principle of lost buoyancy method. V initial is equal to V final. अंडर वाटर वॉल्यूम ही ना सर? V जब भी वॉल्यूम की बातें करूंगा तो हमेशा अंडर वाटर वॉल्यूम ही होगा। अंडरस्टूड है ये? Okay. Any doubts in this one? Whatever I've just spoken. सर ये चीजें डिपेंड भी करेंगी, लाइक हमारी वेसल कितनी लोडेड है, लाइक इफ ऑलरेडी वी आर ऑन द फुली लोडेड वेसल, कुछ भी हो उसके बाद जाए। This could be fully loaded, it could be partially loaded, it could be ballast, कुछ भी हो। इन ऑल कंडीशन, ओके In all condition, ये फंडा रिमेन यही रहने वाला है। सर ये अंडर वाटर वॉल्यूम सेम क्यों रहेगा, दोबारा बता दें प्लीज। भाई 500 क्यूब था मेरा, 500 क्यूब दरिया को चला गया, तो रिजर्व बॉयंसी ने मेरे को 500 क्यूब दान में दे दिए मेरे जहाज को, नहीं तो मेरा जहाज टॉपल ओवर कर जाता, अनस्टेबल हो जाता। तो रिजर्व बॉयंसी कहती है कि भैया ये ले। रिजर्व बॉयंसी इज लाइक योर फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज लाइक योर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। इसमें पानी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। वो फिक्स डिपॉजिट से 500 रुपया निकाल के आपको दे रहा है कि अच्छा भैया 500 रुपये तुमने गुम गए थे, अब 500 रुपये ले लो। ओके सर। सब डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो केजी भी सेम रहेगा फिर तो। अभी 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 आगे मत भागो, डोंट रन आगे, अभी पहले वॉल्यूम पे अटको। अभी वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम में जी किसी सर। को कोई डाउट हो? नो सर। ओके।
Now volume into density gives you displacement. Displacement. So therefore, W Is initial same. is equal to W final. जी sir. This becomes my second basic principle of loss buoyancy method. W remains constant. That means अगर मेरे जहाज की डिस्प्लेसमेंट 50,000 टन थी बिफोर बिल्जिंग, देन बिल्जिंग के बाद भी वो 50,000 टन ही रहेगी. Okay. डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज, डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. ये मेरा सेकंड बेसिक प्रिंसिपल हो गया. साउंड्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव क्योंकि मैं पानी अंदर ले रहा हूं, तो लॉजिकली इट इज लाइक माय बैलेस्ट. Yeah. But you have to remember that there is a hole over here on my ship side. The hole is, I've got no control over it. So the water can freely come in and go out. When I take a ballast, I open the sea chest, then I shut the sea chest, right? If I shut the sea chest, the ballast becomes a part of my ship. But here, I'm not shutting any sea chest. The hole is still open. If I manage to plug that hole and cement it, then this will become a part of my ballast, part of the ship. Then my displacement will change. But so long as water can freely come in and go out, this is a part of the sea. This is a part of the darya. सर बट वाटर प्लेन एरिया तो चेंज होगा ना सर? अभी वाटर प्लेन एरिया पे मत जाओ, अभी आगे मत भागो. अभी अभी मैं बेसिक्स पे हूँ. अभी वाटर प्लेन एरिया पे भी आऊंगा मैं, I'll come आगे. अभी volume is constant, therefore W is constant. Why? Because W is equal to volume into density. Simple. जी. If W is constant, then the geometric center of W is known as kg. Then kg is constant. So kg initial is equal to kg final. That becomes the third basic principle of kg remains constant. ये मेरे तीन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने वाले हैं बिल्जिंग के, जो मुझे अपने दिमाग में बिठा लेने हैं. V, W and kg will always remain constant. They will not change. Come what may. Any doubt on these three basic principles? No sir. That means if I came with a kg, initial kg of 10 meters, my final kg will also be 10 meters. Okay. अगर मेरे ये तीन चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं, तो मेरी क्या चीज बदल रही है? What about my draft? My draft is changing. Yes sir. So draft Increase is होगा. increase हो रहा है. So draft changes. Draft is increasing. All right. If my draft is increasing, what about my KB? सर तो अभी इवनली सिंक होगा ना सर? Hmm. इवनली राइज करेगा ना तो सेंटर. तो KB मेरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनिशियल एंड फाइनल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. नहीं. होगा सर, ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो भाई, ड्राफ्ट बढ़ रहा है तो KB तो ऊपर जाएगा. KB will increase. KB changes. My draft is increasing, so KB has to increase. There's no question about it. Yes, no. Yes sir. Yes, sir. Okay, so my KB changes. All right.
What about my underwater shape? चेंजेस सर. सर चेंज होगा सर. Underwater shape चेंज सर. क्यों? सर जहाँ पर होल है वो एक तरीके से इन एंड आउट वाटर पास कर रहा है, तो पार्ट ऑफ द सी ओनली. तो इनिशियली मेरी अंडरवाटर शेप क्या थी? बॉक्स शेप वैसल. बॉक्स शेप वेसल, WL के नीचे वाला पार्ट, ये था मेरा अंडरवाटर शेप. जी अब मेरी अंडरवाटर शेप क्या है? सर. दो बॉक्सेस है. दो बॉक्सेस एक, हैं. यस ये सर. दो बॉक्सेस हैं. या एक बॉक्स ये रहा, ये वाला, और एक बॉक्स ये रहा, जी और ऊपर से कनेक्टेड है. जी सर. बट अंडरवाटर शेप मेरी Change. अब दो बॉक्सेस हो गई है. So my underwater shape has changed. It Yes, is sir. two boxes now. From Two one box, boxes. it has become two boxes. Agreed? Yes sir. यस. What about BMT? BMT is equal to IT by V. IT is equal to LB cube by 12. V is LBD. So BMT will be equal to short form B square upon 12D. So BMT is equal to B square by 12D. सर एक बार BMT और बता दिए, मिस आउट हो गया मुझसे. BMT is equal to IT by V. Is equal to LB cube by 12 LBD. Will be equal to B square by 12D For a box shape vessel. for a box shaped vessel. Yes sir. सर BMT डिक्रीज होगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So ड्राफ्ट मेरा बढ़ रहा है, जी तो वो घटेगा. ये घटेगा, तो BMT घटेगा. Now, so BMT decreases. KB plus BMT is equal जी. to KMT. KM. KB बढ़ रहा है, BMT घट रहा है, घट रहा है. तो KMT चेंज होगा. हम्म. तो KMT चेंजेस. बढ़ेगा घटेगा वो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं. आई एम जस्ट सेइंग इट चेंजेस. And therefore BMT will also be changing. Minus Kg, which is constant, जी. GM. will give me GMT. जी. So the GMT will change. So the GM changes. So therefore the stability changes. We will find out how it changes. That is a separate part. What about, can you tell me something about free surface? फ्री सरफेस ऑफ कोर्स सब बढ़ेगा. नहीं नहीं घटेगा. कम होगा सर. कम होगा सर. कम होगा सर. विल बी रिड्यूस्ड. सोचो. FSC FSC
कंपार्टमेंट में सर पानी आया तो फिर एफएसएम आएगा सर, एफएससी बन जाएगा उससे। कंपार्टमेंट में पानी आया है, एफएसएम बट कंपार्टमेंट फुल्ली फिल होगा ना, जो भी एक तरीके से वो क्लोज सिस्टम बन जाएगा, तो एफएससी जरूरी नहीं है फुल फिल होगा, वो तो डिपेंड करता है। पानी उतना फिल होगा जितना बाहर का पानी होगा। जी जी तो अंदर का पानी और बाहर का पानी तो मैच कर बढ़ेगा जाएगा। सर, बढ़ेगा एफएससी। The red portion is a part of सी the darya. यस सर। वैसे एफएससी अनचेंज रहेगा सर। तो एफएससी अनचेंज रहेगा क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द दरिया। एग्रीड? यस सर। Because it's a part of darya. It's not a part of the ship anymore. So FSC unchanged रहेगा। Agreed? ओके सर। All right. So all this is a concept which comes under the category, this whatever we are doing just now, whatever we did just now is a concept which is followed by all Commonwealth countries. This is a concept followed by all Commonwealth countries. Commonwealth countries कौन सी हो गई? The countries which are linked to UK, which are colonized by UK. Absolutely right. So that means we are talking about UK, Australia, Canada, India, Pakistan, New Zealand, and a lot of European countries. So all of these countries follow, all these 28 odd countries follow this concept. This concept is called as lost buoyancy concept. अब एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो कौन सी कंट्रीज होंगी? अमेरिकन स्टैंड। Correct. Because US has to be different. या So that is called as the US led method. अब उसका नाम क्या है? वो कॉन्सेप्ट है which is called as added weight method. मतलब मैंने ये 500 टन का पानी जहाज पे लिया, तो मतलब मैंने ये बैलेंस लिया है, यस सर। मतलब मैंने ये लोड किया है, कि मैंने ये ऐड किया है जहाज पे, समथिंग जैसे हम बैलेंस करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैंने अगर 500 टन लिया पानी, तो मेरे जहाज की अंडर वाटर वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम चेंजेस। बिकॉज मैंने ये लोड कर दिया है। अब वॉल्यूम चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, तो डब्ल्यू चेंजेस, तो डब्ल्यू चेंज हो गई, केजी भी चेंज, तो केजी भी चेंज हो गई, एफएससी भी चेंज, अच्छा ड्राफ्ट तो चेंज हो ही रहा है, एफएससी चेंजेस। करेक्ट। ड्राफ्ट की जगह तो के भी चेंजेस। अंडर वाटर शेप डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। अंडर वाटर शेप इज कांस्टेंट। पहले भी बॉक्स था, अभी भी बॉक्स है, पहले एक बॉक्स था, अभी भी एक बॉक्स है,
BMT changes. KMT changes. KG has obviously changed. So GMT also changes. FSC changes because this is a part of the ship. It is not a part of Darya. This uses that mechanism or this assumption that this is a part of the ship, not a part of the Darya. So internationally, these two systems coexist. And both are right there in their own way. The GM both methods use will be different. But when you finally calculate the writing moment, that is W into GZ, the writing moment of this and the writing moment of this will be the same. There will be no difference in the writing moment. So therefore, both the systems coexist. So we can't say this is more accurate and this is not. We cannot do that. However, country-wise, we follow the mechanisms. As far as we are concerned, आपको एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉस्ट बॉयंसी मेथड एंड एडिड वेट मेथड, ये आपका आंसर है. कई बार 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये लिखना है और ये एक्सप्लेनेशन दे देना. As far as numericals are concerned, in the class I will not be following this method. तो इसको मैं काटा लगा रहा हूँ. I will be following this, the lost buoyancy method, because in MMD and DG everywhere we use lost buoyancy method. But for the sake of the theoretical question, differentiate between lost buoyancy and added weight, ये रहेगा आपका. ठीक है, is that okay? Yes, sir. हाँ जी, any doubts? सर लोस्ट वेट मेथड में सर एफएससी अनचेंज रही है सर, एक बार बताना सर वो कैसे. ये वाला. तो बेसिकली ये this is a part of the Darya. This is a part of the sea. It's not a part of the ship. So free surface is if anything is of the ship, not outside the ship. सर ये अगर इसकी पहले कोई जिस कंपार्टमेंट में होल हुआ है उसमें एफएससी हो तो वो तो सर चेंज करेगा ना शिप की होल की. हाँ, अगर इसमें कुछ पहले अगर पानी होता जी सर तो फिर कहानी डिफरेंट होती. बट मेरा तो ये अभी मेरे कंपार्टमेंट एम्प्टी रखा हुआ है. ओके सर. अगर ये कंपार्टमेंट अगर इस कंपार्टमेंट में कुछ पानी पहले से होता, पार्शियल पानी होता या पार्शियल लिक्विड होता, तो वो एफएससी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती. सर ये अंडर वाटर शेप चेंजेस का बता देंगे, और ये दो शिप्स किस मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे सर. तो अंडर वाटर शेप जो पहले मेरी जो शेप थी वो ये थी, ये बॉक्स था WL के नीचे वाला. अब मेरा W1 L1 के नीचे वाला बनेगा. तो W1 L1 के नीचे एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, और ये जो है सारा का सारा दरिया को चला गया. ओके सर, थैंक यू. सर ये एक क्वेश्चन था सर, ये एडेड वेट मेथड में जो वेट एडेड हुआ है जैसे 500 मीटर क्यूब, बट जो वाटर है सर वो इन एंड आउट हो रहा है ना, तो वेट एडेड कैसे हुआ सर? भाई वो कॉन्सेप्ट है उनका. वो अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, ये 500 टन हमने जहाज में लोड कर लिया. तो सिंस ये 500 टन हमने लोड किया है, तो देयरफॉर दिस इज लाइक आई हैव टेकन इन अ बैलेस्ट, आई हैव टेकन इन अ कार्गो. They want to use that
उनकी थिंकिंग है. अब नाउ यू कांट चेंज दैट. The Americans always have a different concept. You are aware of that. हम मीटर्स में चलते हैं, वो फीट एंड इंचेस में चलते हैं. अब वो उनका कॉन्सेप्ट है, नहीं अब नहीं बदल सकते आप उनको. हीरोगिरी नहीं जाएगी सर. तो यू कैन नॉट. उनका कॉन्सेप्ट वही शुरू से चल रहा है. वो फीट एंड इंचेस में चलते हैं, वो पाउंड्स में चलते हैं. आप किलोज में करते हो और ग्राम में करते हो. वो कहते हैं नहीं हम तो पाउंड से करेंगे. गैलन में ले जाते हैं पेट्रोल सर. सर चाइनीज क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड? भैया मुझे नहीं पता. मैं इतनी रिसर्च नहीं करी अभी मैंने. बस एक कोरोना झेल रहे हैं वही काफी है. सर एक चीज पूछी, SFBM के क्वेश्चंस में जो अगर केजीज में जैसे वेट दिया हो तो उसको हमेशा चेंज करना जरूरी है न्यूटन्स में या किलो न्यूटन्स में, या वी कैन सॉल्व इन केजीज आल्सो? You can solve it in kgs also. ठीक. You can solve it in kgs. Your answer will be the same. Sorry, the shape of the curve will be the same. ओके सर, मतलब केजीज में सॉल्व करने को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वही पूछना है. नहीं, no problem, no problem. ओके सर, थैंक यू. वो खाली जब डेसिमल्स आ जाता था तो इसलिए मैंने वो आपको तरीका बताया था, हाउ टू गेट रिड ऑफ द डेसिमल. वो 9.81 से मल्टीप्लाई करके. ओके सर. ठीक है. So let's stop here. I want you to open up your nutshell volume 2, Midship Compartment Bilging, and please read whatever we have done over here. Please do one reading of that. No numericals to be solved, nothing. वो सब मैं क्लास में करूँगा, वो अलग कहानी है पूरी. खाली I just want you to do the reading of this thing, theory part of it, only theory. Please do a reading of that. ठीक है. सर वन मोर क्वेश्चन सर. सर ये जो आपने लॉस्ट बॉयंसी करवाया सर, इसमें कंपार्टमेंट इज एम्प्टी का कंपार्टमेंट या इट इज empty at this point of time. It is empty. अभी बाद में मैं उसमें घुसाऊंगा कार्गो, बट अभी मैंने पहले खाली रखा है जान के. अभी कार्गो नहीं डाला, अभी डालूंगा धीरे धीरे करूंगा. अभी पहले खाली पानी डाला है. पहले खाली पानी को संभाल लो. let the water flow in. let the sinking happen. अभी से वेसल अनस्टेबल हो गया सर. अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने. अभी तो खाली धीरे धीरे पानी स्लोली अंदर डाल रहा हूँ. ठीक है. ऑलराइट, सी यू देन टुमारो. बाय. सर ठकराल साल